Hi students, Shivam this side, myself Shivam Deswal, and right now I am handling corporate relations at Wayspire, and I'll be conducting this webinar for you guys. And the topic for today's webinar is going to be off-campus drives and internships, and how the students can get a good number of internships through the off-campus drives, and what are the challenges and the benefits of the off-campus drives that the students do go through like during their graduation years and after completion of their graduation. We'll be covering all the aspects like what are the challenges the students can face during that, what are the kind of preparations the students can make to ace the off-campus drives, and what are the things and the skill development initiatives that the students can take to get through these off-campus drives and internship opportunities that we do get. During this, we'll be covering some aspects that are common in both off-campus and on-campus drives, like your interview preparation, the challenges during the interviews, and everything. There will be several other things during that we will be covering, like how off-campus drives are different from on-campus drives. What are the benefits of the off-campus drives and what are the benefit of on-campus drives? We'll be covering all of these things. So, without wasting any further time, let's start with the webinar. And as I told, the topic of this particular webinar that we are organizing is off-campus drives and internships for this. And after completion of the webinar, we'll be having a question and answer session as well, where you students can shoot up with your queries, like what are the things that you seem are going to be important for this particular genre that we are talking about, the off-campus drives. So before starting, like, can you guys give me a thumbs up? Like, how many of you have already gone through some kind of off-campus drives and internship opportunities? Okay, and what about the graduate students? Can the graduate students give me a thumbs up? Okay, guys, so we do have a good number of students who are still studying and have given off-campus interviews and have gone through the drives, and we do have a good number of students who have already graduated as well. So we'll be covering the aspects of all the students for that. So continuing forward, guys, let's start without okay, guys, let's start then. So the first thing that we are going to cover during this webinar is like what is off-campus drives and internships. So guys, there are two kind of drives and recruitment initiatives that the organizations take. The first one is a on-campus drive, and the second thing that they do is a off-campus drive. So during an on-campus drive, the organizations visit the particular campuses. You can say कि आप लोगों के कॉलेज में वो लोग visit करते हैं and they go through your training and placement cells. एंड वहां से वो जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. नॉट इवन जॉब अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप एंड लाइव प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज वो वहां से आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है. इन दैट योर कॉलेज डू हैव अ फेयर शेयर, लाइक आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर्स की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं which the organizations agree to, and there are certain conditions of organizations to which the college management do agree. And the second kind of drive that the organization conduct is an off-campus drive. So what is an off-campus drive is, an off-campus drive is a open for all platform where any particular employee can apply from any particular background or any college. कोई भी स्टूडेंट वहां पे अप्लाई कर सकता है फॉर एन ऑफ कैंपस ड्राइव. ऑफ कैंपस ड्राइव आर ऑफ टू टाइप्स. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक वॉक इन इंटरव्यू पुश कर सकती है फॉर एन ऑफ कैंपस ड्राइव, जहां पे आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जाके अपने इंटरव्यूज देते हैं. एंड द सेकंड काइंड ऑफ कैंपस ड्राइव इज थ्रू जॉब पोर्टल्स एंड रिक्रूटमेंट पोर्टल्स, where companies list their vacancies and their open positions on different job portals like LinkedIn, Unstop, Internshala, and वहां से students apply करते हैं. Those are the virtual drives. तो ये दो तरीके की ऑफ कैंपस ड्राइव्स कंडक्ट होती हैं. सेम एज एन ऑन कैंपस ड्राइव, ऑफ कैंपस में भी दो मोड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज अ वॉक इन इंटरव्यू एंड सेकंड वन इज अ वर्चुअल ड्राइव. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कैंपस ड्राइव? First one is a wider range of companies. Being moreover
फोकस्ड ऑन द ऑन कैंपस ड्राइव्स, तो वहां पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज होती हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक वो ऑर्गेनाइजेशंस जो आपकी कॉलेज के इनिशिएटिव्स के थ्रू जाते हैं, एंड वहां पे एक से होता है लाइक आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल्स जो होते हैं, they make you sit for a certain profile, like being a computer science graduate or mechanical graduates, आप लोगों को एक certain profile की companies का ही exposure मिलता है। That's not the case in off campus drives. Off campus drives में आपको एक wider number of organizations का access मिलता है, that's totally up to you where you are applying for an off campus drive. तो वहां पे एक आपको wide range of spectrum मिलता है for different profiles and different opportunities. And the second thing is a potential for higher compensation. So what usually happen, guys, is that during the on-campus drives में आपका जो CTC होता है and the compensation that you will be getting is that is usually fixed beforehand. जब आपके पास वो job notification आती है उससे पहले ही वो चीज fixed रहती है that what is the compensation the students will be receiving for a particular profile. That is not the case in an off-campus drive. Off-campus drive में you do have a chance that you can negotiate your compensation or the expected CTC according to your own requirements. वहाँ पे आप HR से discussion कर सकते हैं. Off-campus drives are free for that. The CTC is not fixed. There are some certain off-campus drives जहाँ पे CTC fixed होता है, but for that same as always आपको prior information होगी. It will be mentioned in the job description. Third thing is the real world experience and network expansion. So real world experience counts as in going for the jobs. Here you have complete flexibility like job searching, in application submission, interview preparation and interview conduction. ये सब कुछ वहां पे free like that is not being governed. Like वहां पे सब कुछ आपको खुद से करना है. You will be applying for a job. आप उस job को खोजेंगे, वहां पे apply करेंगे, and you will be doing the preparation all by yourself. There are certain things, काफी चीजें हैं जहाँ पे आप interview preparation में help ले सकते हैं. Like you can go through skill development initiatives and programs. You can go through mock interviews. You can prepare for HR interviews. So these kind of things you have to do it on your own. So this is much more of a real world experience, like how things happen in real world. जब आप एक organization को join कर लेते हैं and उसके बाद switching that organization and everything, तो वो एक real world experience होता है. And network expansion के भी आपको chances मिलते हैं. You go to different off campus drives, वहाँ पे आपको अलग profiles के different mindset के लोग मिलते हैं. You do connect with them. तो नेटवर्क एक्सपेंशन की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको ऑफ कैंपस ड्राइव से मिलती. नाउ अंडरस्टैंडिंग द ऑफ कैंपस ड्राइव प्रोसेस की ऑफ कैंपस ड्राइव की प्रोसेस क्या होती है. फर्स्ट वन इज इट्स ऑलवेज अबाउट द प्रिपरेशन दैट यू डू. आप कैसे प्रिपेयर करते हैं. सो मे आई नो लाइक कैन यू गाइज गिव मी अ थम्स अप लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हैव प्रीवियसली टेकन एनी काइंड ऑफ हेल्प for the preparation of the interviews? Kindly give me a thumbs up. Okay, guys. So as I can see, many students are giving thumbs up. So that's what we are talking about, guys. Preparation is the key. You do prepare for that, and there are certain things that you need to do. Second thing is the planning. आप कैसे plan कर रहे हैं अपनी drives को and अपने interviews को? How you plan for that? And the third thing is networking, as previously mentioned by me. जैसे मैंने बताया था कि networking is the key. आप professional networks build करते हैं, उसके लिए आपके पास काफी सारे platforms होते हैं like LinkedIn, Unstock, Fiverr, Upwork. These are the platforms where you connect with particular individuals. If you are doing freelancing opportunities, then there are certain platforms like Fiverr and Upwork. And if you are a working professional and a student who is looking to go in a specific industry itself, जिसको एक particular profile की ही job करनी है, they can connect to individuals through their LinkedIn and other platforms. Now coming to the other things. So there are other things as well. The challenges in off-campus drives. वहाँ पे क्या challenges होते हैं? First one is higher competition. जब आप on campus drives में जाते हैं, when you attend those on campus drives, तो आपका जो competition होता है that is limited to your particular branch, your class and your college.
But when you go for off campus drives, जब आप off campus drives में आते हैं, there you meet certain kind of people. वहां पे आप like approximately all over the industry आपके पास competitions होते हैं, जैसे like for the same profile an experienced guy will also be applying and a fresher guy who is just eligible for that particular job, he or she will also be applying. So it is all about the competition. The freshers will be having much more higher competition in off campus drives. So these are the challenges that we face. The second thing is the lack of guidance. So for the freshers, it's always about the lack of the guidance, because being a working professional, अगर आप already work कर रहे हैं किसी particular organization में, तो आप वहां पे off campus drives को ज्यादा अच्छे से समझते हैं. You know what the organization is looking for. And for the freshers, it is a kind of lag, which you can say that it's about lack of guidance. For the on campus drives, जो drives आपके कॉलेज में कंडक्ट होती हैं, for that your training and placement cell do prepare you, वो आपको preparation देते हैं. But for the off campus drives, it's all about the guidance and the preparation that you do. So off campus drives में जैसे मैंने बताया कि students can apply for different profiles as well. If you are like pursuing your graduation in mechanical, but you do have good command of certain coding languages and you do have a good command of certain tools, so you can apply for computer science roles as well in off campus drives. So these are the things. Then complex application process. Application process की मैं बात करूं तो every organization have their different application processes and every platform have their different application processes. अगर आप किसी particular profile या job के लिए LinkedIn से अप्लाई कर रहे हैं तो देयर यू विल बी हैविंग डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेस, एंड अगर आप डायरेक्ट किसी कंपनी के जॉब पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं तो देयर यू हैव डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसेसेस. सो इन ऑफ कैंपस ड्राइव्स यू हैव टू मैनेज ऑल द एप्लीकेशन प्रोसेसेस. जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं वो आपको खुद से मैनेज करने हैं, आपको उसका ट्रैक रखना है दैट व्हाट इज द स्टेटस राइट नाउ, हैज द रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग बीन डन, व्हेन इज द टेक्निकल round is to be conducted, how many rounds are to be conducted, what about the HR round and everything. तो इन सब चीजों का ट्रैक आपको खुद से रखना पड़ता है. You have to keep a track of all of these things. So these are some of the common challenges which the students face in off-campus drives. Now coming to another thing, like off-campus drives are fine, but what about off-campus internships? How to do that? तो ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए भी सिमिलर थिंग्स हैं. जैसे जॉब्स के लिए ऑफ कैंपस ड्राइव्स सेपरेटली कंडक्ट होती हैं, सिमिलरली इंटर्नशिप्स के लिए भी ड्राइव्स सेपरेटली कंडक्ट होती हैं. बट व्हाट वी हैव like observed in past 2 to 3 years, or me talking about my individual experience, तो what I have seen is कि जो ऑफ कैंपस internships हैं, they are being conducted in virtual mode only. Internships के लिए जो drives हैं वो virtual mode में ही conduct होती हैं. That is what I have mentioned. तो उसमें से 4 चीजें which the students can keep in their mind. First one being paid versus unpaid internship. Always keep in mind whether the particular internship for which you are applying off campus is a paid one or a unpaid. वहां पे आपको स्टाइपेंड या मॉनेटरी कंपनसेशन मिल रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन के एंड से या नहीं मिल रहा है. सो बिफोर ज्वाइनिंग it's always about 2 things, skill and money. So if you do have the prominent skills and if you require the money itself, then these things you have to keep in mind. जो money metrics है, that you have to keep in mind during the internship. And now coming to the next thing. So guys, just one thing, that are you guys able to see my screen? Give me a thumbs up if you all are able to see my screen. Okay, then I think it's visible to all. So as I was speaking about that, monetary compensation always plays a major part in internship, because as you guys have noticed कि जो stipend का monetary compensation है, that is always less than a full-time job. So always keep that in mind कि work location कहाँ है, which city it is, वहाँ की living expenses क्या होंगे, what will be the living cost and everything. So always keep these kind of things in your mind. Second thing is remote versus on-site.
Remote versus on-site means like remote job profiles and internships count as in work from home, where you do have the flexibility. आपके पास flexibility कि आप अपनी work location से काम कर सकते हैं. You don't need to report to the office. The second thing is an on-site internship. For the on-site internship, what we guys do is like जो interns हैं, they have to join at particular office location and they have to be available during the complete internship period. So always check that itself, because for internships, the thing is that remote and on-site during internships, it's always about the paid leaves. So always check that as well, that if you are getting the remote opportunity, then how many leaves you are getting. And if you are getting an on-site opportunity, then at that scenario, how many leaves you are getting. So meanwhile, students, what you can do is, meanwhile, we'll be going through the things. If you guys are having any kind of queries and doubts in between, you guys can continue posting that in the in chat system, and after completion of the topics and everything, we'll be going through the Q&A session where I'll be answering all your queries and doubts. So meanwhile, students can continue putting their doubts in the chat option. So now coming to the next thing, that is the preparation for off-campus drives. How to prepare? Uski preparation kaise करें? There are always 4 to 5 key matrices when you prepare for any particular job profile or a drive. Like if you know that आपके interviews कब scheduled हैं, in that scenario, we call it a camp like job drive preparation, and if you don't know the dates, then we call it a profile preparation. So drives के लिए preparation आपकी majorly what is focus is that resume building, skill enhancement, mock interviews, and networking. These 4 matrices we will be covering in this webinar, where resume building inculcates as your ATS software and your keywords. So these 2 things are always important, because nowadays majorly all the MNCs and organizations are using ATS software to shortlist the resumes due to the high number of applications. So how an ATS software work is, ATS software कैसे काम करता है कि जो job description जिस profile के लिए आप apply कर रहे हैं, let's suppose if you are applying for a web developer application, तो वहां पे there are certain keywords जो कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में होंगे, लाइक व्हाट आर द कोडिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड, द प्रोफिशिएंसी लेवल इन दैट, लाइक आप एंगुलर पे कितना बढ़िया काम कर सकते हैं, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ये सब कुछ कॉमन टर्म्स हैं जो एक वेब डेवलपर की सीवी में एटीएस देखता है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो ये चीजें आपको हेल्प करती हैं इन योर प्रिपरेशन. तो एटीएस प्रिपरेशन एंड कीवर्ड प्रिपरेशन, these 2 things play a major role in your resume building. The second thing is the skill enhancement. How to enhance your skills to be at that level. There are certain job postings and off-campus drives which require a certain level of proficiency in those things. Like वहाँ पे experience and proficiency level mentioned होता है. So on the basis of that, आप skill enhancement कर सकते हैं. Like if you guys are aware about the basics, then you can go for certain skill development programs and courses which are readily available in the market. उसके लिए आप कुछ courses कर सकते हैं, online skill development programs कर सकते हैं, where you will be getting industrial training and you will be having hands-on projects as well. तो ये चीजें आपको help करती हैं in increasing your job readiness. Off campus drives में, if you are having a good resume, if you are having good projects and certifications on your hand, तो वहां पे 30 to 40% आपको एज मिलता है दूसरे फ्रेशर कैंडिडेट्स के ऊपर. दीज आर द थिंग्स. नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, दैट इज द मॉक इंटरव्यूज. तो लाइक resume building and the theoretical part everyone can cover, but when it comes to the communication skills and certain things, तो वहां पे उसकी प्रिपरेशन के लिए what the students can do is they can join certain programs where you get mock interview preparation, or you can prepare on your own. आप खुद से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं. There are certain methods for that, like video recording, giving mock interviews to your friends, or as I told, joining certain programs for that preparation. तो ये 3 से 4 चीजें आप कर सकते हैं. Like you can first of all practice your communication skills. You can check that what are the communication skills you are having. There are certain tools right now in the industry, as you know that there are certain AI tools trending.
तो उन सब की आप मदद ले सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर द मॉक इंटरव्यूज. एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज द नेटवर्किंग. बिकॉज ऑन कैंपस ड्राइव में गाइस जो आपका नेटवर्किंग पार्ट है वो आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम पूरा देखती है. बट इन ऑफ कैंपस ड्राइव नेटवर्किंग भी आपको खुद से करनी है. एज आई टोल्ड यू दैट दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट थिंग. ऑफ कैंपस ड्राइव एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चीज होती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एप्लीकेंट बोथ. तो नेटवर्किंग आपको वहां पे बिल्ड करनी है. देर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स, जैसे आप लिंक्डइन को रेडिली यूज कर सकते हैं. अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल में ही इंटर्नशिप या जॉब चाहिए तो आप उस प्रोफाइल के इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ यू गाइज आर हंटिंग फॉर योर ड्रीम कंपनीज लाइक द फॉर्च्यून 500 और द बिग 4 कंपनीज, तो वहां पे आपको ये चीज हेल्प करेगी कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्टेड रहें, सो दैट यू नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. वहां पे क्या इवेंट्स हो रहे हैं, व्हाट इज द वर्क कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, एंड अभी वहां पे कौन सी पोजीशंस अवेलेबल हैं. तो ये चीजें नेटवर्किंग से आपको पता चलती हैं व्हेन यू आर कनेक्टेड विद द लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स. जिस प्रोफाइल पे आपको काम करना है, जिस कंपनी में आपको जॉब करनी है, अगर आप वहां के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स तो आपको बेनिफिट्स वहां पे मिलते हैं. नाउ मैक्सिमाइजिंग इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस. आप अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं? लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज सेट क्लियर गोल्स. अगर आपको पता है कि आपको किस प्रोफाइल में और किस कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, देन दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. एंड इफ यू नो कि लाइक यू जस्ट वांट एन इंटर्नशिप, व्हाट, हाउ एंड वेयर, दैट यू डोंट नो, तो फिर आपका जो मेजर टाइम है वो इसी चीज में जाएगा, दैट व्हाट डू यू वांट टू डू. So always set clear goals that upcoming these months I want to do this. उसके लिए आप चीजें कर सकते हैं like seek feedback. आप पूछिए that like hey, आपने सीनियर्स से, टीचर्स से, अपने मेंटोर्स से, एंड जैसे मैंने बताया कि नेटवर्किंग के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं. तो यू कैन आस्क देम एज वेल दैट हे मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में इस कंपनी में इंटर्नशिप या जॉब करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू नो दैट व्हाट आई विल बी रिक्वायरिंग. तो आप वहां पे अपना फीडबैक ले सकते हैं दैट आई एम प्रोफिशिएंट इन दीज थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट आई शुड बी हैविंग. लाइक जो आपके कॉलेज में सीनियर्स हैं जो उन पर्टिकुलर कंपनीज में कर चुके हैं, उस प्रोफाइल पे काम कर चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं दैट राइट नाउ अभी इंडस्ट्री में किस चीज की रिक्वायरमेंट है. एंड फॉर दैट नेक्स्ट थिंग नेटवर्किंग. एज आई टोल्ड यू कि अगर आप लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्टेड हैं, उस प्रोफाइल के लोगों से कनेक्टेड हैं, तो आपको काफी सारी चीजें में हेल्प. And the next thing that we'll be doing is what about the skill development part. So see guys, internship के experiences better करने के लिए the first thing that the companies are shifting right now is from degree based hiring to skill based hiring, because right now degrees every student are having but it's all about the skills. आप लोगों ने भी देखा होगा that on the job portals and off campus drives there are n number of opportunities for different profiles, but when the same thing comes to the on campus drives तो वहां पे जो प्रोफाइल्स हैं वो लिमिटेड होती हैं एंड वहां पे वैकेंसीज फोकस ऑन डिग्री बेस्ड हायरिंग. बट वेयर एज फॉर ऑफ कैंपस ड्राइव्स वेयर यू कैन गेट बेटर ऑप्शंस, it is completely focused on skill based hiring. So always work on your skills. अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल में इंटर्नशिप या अपना कैरियर ग्रो करना है एंड यू आर नॉट हैविंग दोस particular skills and you think that you are lacking, so start working on that. That should be your first priority, that how to develop your skills and after that what to develop in those particular skills. So these are the things. Now coming to the next thing, that is opportunities. What are the opportunities जो आपको मिलती हैं ऑफ कैंपस ड्राइव्स में? तो गाइज सी ऑफ कैंपस ड्राइव्स में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. एज यू नो दैट स्टार्टअप कल्चर इज बूमिंग इन इंडिया. इट्स बीन since past 5 years we have seen a growth of almost 200 plus. We have seen almost 200% growth in the startups that are being started. And we have seen stable startups as well. आप लोगों ने खुद ही देखे होंगे, there are certain number of startups. Like if to give you an example, many of you must have heard about physics wala, right?
So physics wala is a prominent startup जो अभी past 2 years में, as you guys have seen from the YouTube channel, they have built a unicorn company. So these are the things, these are the benefits of applying in startup companies and going over there. The benefits of the startup companies are that you will be getting the opportunities and the exposure which you cannot get in a particular bigger organization. Second thing is the non-profits. So there are certain kind of internships and job profiles, like there are certain profiles for social welfare, for certain things जहाँ पे you work with NGOs as well. तो ऑफ कैंपस ड्राइव्स और इंटर्नशिप्स आपको उस चीज का भी बेनिफिट देते हैं that you can apply for a profile that is better suited for you. एंड फ्रीलैंसिंग ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बताया कि सर्टेन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फीवर, अपवर्क, अनस्टॉप, इंटर्नशाला इज वन ऑफ द बेस्ट टू फाइंड अ इंटर्नशिप. तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी इन डेवलपिंग योर फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट्स एज वेल. तो गाइज नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द इंटर्नशिप्स. कैसे आप एक लॉन्ग टर्म करियर प्लान कर सकते हैं इंटर्नशिप से. सो गाइज, एज मैनी ऑल ऑफ यू नो कि इंटर्नशिप एक फर्स्ट स्टेप होता है वेयर अ स्टूडेंट get in touch with a particular corporate organization जहां पे उनको पता चलता है कि कैसे काम. दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट वी टेक. तो वहां पे तीन चीजें आपके मेजर फैक्टर प्ले करती हैं ड्यूरिंग द इंटर्नशिप्स. आपकी परफॉर्मेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी एंड आपकी नेटवर्किंग. तो इट्स ऑलवेज अबाउट कि एक इंटर्नशिप के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको पीपीओ क्यों देगी. व्हाई दे विल बी गिविंग यू प्री प्लेसमेंट ऑफर्स. फर्स्ट थिंग दे विल सी इज योर परफॉर्मेंस. आपने ईयर ऑन लाइक मंथ ऑन मंथ अपने इंटर्नशिप में कैसा परफॉर्म किया है. व्हाट वाज द ग्रोथ जो फर्स्ट मंथ में आपकी. जस्ट अ सेकंड गाइस. सो गाइस, as I was saying that व्हाट अबाउट द प्रोडक्टिविटी एंड आपकी परफॉर्मेंस. तो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी परफॉर्मेंस कैसे आपकी इंटर्नशिप को और आपके पीपीओ के चांसेस को अफेक्ट करती है. द फर्स्ट थिंग इज योर परफॉर्मेंस. अगर आपकी मंथली परफॉर्मेंस और ग्रोथ रेट है, इफ यू आर हैविंग पॉजिटिव ग्रोथ रेट, then the organization also sees the potential in you and the proactive engagement. आप कितने engaged हैं during the internship. आपने किन लोगों से और कहाँ अपनी एंगेजमेंट की है. हैव यू बीन वर्किंग विद योर कलीग्स, हैव यू बीन इन गुड टच विद योर सीनियर्स. सो दीज थिंग्स डू मैटर गाइस. Discipline and these kind of things do matter when you are working as an intern, because these things will be noted down. आपकी मंथली जो मंथ ऑन मंथ रिपोर्ट्स बनती हैं उनमें दोनों ही चीजें होती हैं. आपकी परफॉर्मेंस, आपकी ग्रोथ और आपकी प्रोएक्टिव एंगेजमेंट. आप कितने एंगेज्ड हैं अपने कलीग से, अपने टीम से, हाउ मच यू आर अवेयर. वो चीजें आपको हेल्प करती हैं. द नेक्स्ट थिंग इज कंटिन्यूड नेटवर्किंग. ऑर्गेनाइजेशन से कितना कनेक्टेड है, वहां पे जिन लोगों के साथ आपने काम किया, आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके मैनेजर्स, आपके जूनियर्स, आप उनके साथ कितना अभी कांटेक्ट में हैं. बिकॉज एज यू नो दैट अपॉर्चुनिटीज कैन कम बाय एनी टाइम. So if you are not getting a PPO at the end of your internship, so it's not like that you are never going to get that PPO. What if that organization is not having the opening at that time? अगर वहां पे उस टाइम कोई फुल टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है आपके लिए सुटेबल, एंड लेटर ऑन that particular organization gets that opportunity, so that's where your networking will help you. अगर आप अपने managers और अपने seniors के साथ network में हैं, you are in regular touch with them, then only they will be providing you that particular opportunity, or else it may be given to a intern who is working there at that time. तो networking आपकी long run में help करेगी. Later on you can always go back to a particular organization if you know the people working over there. So this is a major factor in. Sir, can you please tell me about what is PPO? Guys, as I told you, we'll be definitely discussing your queries. So what you can do is just put in a message in the chat option and I'll get back to you in 5 to 7 minutes. Let me conclude this and then we'll be proceeding further with your question and answers. So now to conclude this, what are the things that we have covered? First of all, as I told you guys, virtual internships and on office and off office. So I have covered both. Like, first of all, we discussed what are the things like
ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ड्राइव्स क्या होती हैं, ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस ड्राइव्स कंडक्ट कैसे होती हैं, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ वर्क लोकेशंस, रिमोट एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस, both. Now virtual internships, as I told you, that remote and on office, both things are there. And skill based hiring, as I told you, that nowadays organizations are moving from degree based hiring to skill based hiring. They are not looking for your degree is just a eligibility criteria to qualify for any particular job. Hiring is being done on skill based. आपके पास skills कितनी है? If you are a graduate from computer science stream and you are applying for a developer role, and if another guy is a graduate from a civil and he is having better skills than you, then what I can guarantee you from my personal experience, that the highly skilled guy is going to get that particular job. So this is what I was talking about. If you guys are not having those skills, if you think that you are lagging behind, then you guys can always go for skill enhancement, skill development programs, and you can work on your own. So sorry guys, I got disconnected. So let's move forward with the queries of you guys. Okay. So kindly guys text your queries. What are whatever queries or questions you are having regarding the topics which we have covered. Just message me and I'll be answering them for you. So one of you guys have asked what is PPO. So guys, PPO is pre-placement offer. Okay, pre-placement offer is something that we give to a particular intern when he or she completed his internship. तो प्री प्लेसमेंट ऑफर को सिंपल चीजों में मैं ये बताऊं तो इट इज अ फुल टाइम ऑफर. जब आप अपने इंटर्नशिप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लीट कर लेते हैं तो वहां से आपको जो फुल टाइम ऑफर के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन आपको जो भी मॉनेटरी कंपनसेशन या पोजीशन ऑफर करती है उसको हम प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं. सो लेट मी नो एनी अदर क्वेरीज इफ यू आर हैविंग. Sir, if we are in the February or January batch, we would able to get this all PPTs in our LMS, and we would get chance that time also to attend this webinar. Okay, so Arisha has asked guys that the paid internships that are being circulated right now in the industry, are they legit? So guys, see, there are two kind of paid internships. Where of the first one is like where the organization pay you for that particular internship that you are doing there. Okay, तो वो जो पेड इंटर्नशिप है वहां पे दैट इज व्हाट वी कॉल स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप. Second thing is an unpaid internship जहां पे you work in a particular organization just for the exposure and the skills part. There the organization doesn't pay you anything, तो वो होती है unpaid internship. And regarding the query which Arisha is having, that the paid internships that are being circulated, तो Arisha, let me tell you that there is no internship जिसके लिए आपको पे करना पड़ता है. The query that you are having, that is about the skill development programs. तो guys वहां पे कंफ्यूजन ये होता है कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको कुछ कंपनीज पोर्ट्रे करती हैं एज इंटर्नशिप्स. तो वो एक चीज है दैट इज वर्किंग इन द मार्केट. सो ऑलवेज बी क्लियर कि आप किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं. ऑलवेज गो थ्रू द एप्लीकेशन फॉर्म and go through the details. After that only apply for any kind of internship. If it is mentioned as an internship, always check whether you are going to work over there or this is a skill development program. So that is there. The process of getting a virtual internship is going to be like this, that as we have done this webinar on campus drives and internships, so there will be certain things that you guys can do. Communities आप join कर सकते हैं. We have a community for Wayspire as well. I'll be sharing the links and everything in the community which you have joined, so you can apply over there. There are certain groups and links जहाँ पे आप apply कर सकते हैं. So guys, see, what I'll be doing is I'll be sharing one Google form with you guys. That Google form is for the skill development initiatives that Wayspire is taking.
So I am sharing the Google form for that. So if you student are thinking कि कोई ऐसा particular domain है या profile है जिसके लिए आप lag कर रहे हैं and you want to apply for that, so kindly fill the Google form out. Our team will be getting in touch with you. They will be guiding you through everything. They will be taking care of your queries and questions as well. So it was nice interacting with you all students. So kindly fill out the Google form. I'll be sharing that Google form in the community as well. So do fill out the Google form in whichever domain you want to upskill yourself and you want to have MNC certifications. Our team will be ready to help you out.